welcome to the highlights of Round 8 at the National Stadium Karachi. The QeA Trophy now playing Sindh and Northern. Both the sides wanted to bat first, and at the toss it was the luck for Nauman Ali, the captain of Northern, who won the toss, called it right and decided to bat first. The two sides, Northern getting in a debutant and playing the first game for his side, Mubashir Khan, the batsman and an off-spinner. And Sindh also making a few changes. Saad Ali comes in to strengthen the batting. They left out their top wicket taker, Tabish Khan, for this match. Let's join Northern as they come out to bat on day one, session 1. Hello and welcome to a brand new morning, a brand new game, and it's Round 8. Welcome to the National Stadium. It's one of the coldest mornings here, around 17 to 18 degrees at almost 10 o'clock. Straight away runs on the legs. Northern opened their account with a couple. Northern's been good. They've not only been good in their spin department, with their captain leading, as I said. Brilliant shot. Nawaz's first boundary of the Round 8 here in National Stadium, Karachi. Yes. You know, you don't have to be a die-hard fan of cricket. If you just like the game, you'll always fall in love with a shot like this. And they're down in the table. That's a beautiful shot, just leaning into it on the onside. As I said, Asghar is leaking runs. He's just trying a little too much here, if one feels. Never mind, Aziza. Too full on this occasion. Azizullah first outside the off stump, and this time slightly on the leg side. And Nasser Nawaz, my word, he liked to go for those shots right from the word go. Like this, the keeper almost jumps right in front of the first slip and dives into the second. Talk about what I was saying. Well, it's very well done from Shehzar Mohammad. He's very athletic. That's a very good ball. Had to play at it. And gets that good edge. Shehzar does the rest. Sindh would be happy to see the backup and opening batsman this early on. It's 21 for 1. Umar Amin is the new man in. He has been in brilliant form throughout this tournament. A couple of centuries and even more 50s for him. The edge, and this one is not taken by the fielder. Did it carry or not? Till Asad Shafiq, this is going to be the question. What an over coming to an end by Mir Hamza. Let's have a look at that again. That's Asad Shafiq, the slip specialist. It's a very thick edge. That's dropped. No way. That should have been taken. अंपायर के जहन में कोई शुबा नहीं था, फौरन ही उंगली फजा में बुलंद हुई। एक और कामयाबी उमर अमीन, जिनका कैच गिरा था पिछले ओवर में, इस बार उन्हें अपनी मदद आपके तहत ही चलता किया मीर हमजा ने। जी बहुत ही शानदार आगाज़ के लिए और मीर हमजा की जानिब से अच्छी जगह पे पिच हुआ। इंडे पर था, लेट हो गए थोड़ा उमर अमीन और नी रोल पे लगा। बहुत ही आसान डिसीजन रहा आसिफ अंपायर के लिए। शोजब राजा ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। ये 3 रन्स बना सके, एक मौका भी मिला था उमर अमीन को। 8 बॉलों का उन्होंने सामना किया। 25 पे 2। एक और कैच और छोड़ दिया। बहुत ही आसान कैच था शेजर के लिए। गेंद उतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं आई, इस पिच में उतना ज़्यादा बाउंस भी नहीं है, लेकिन ये जो कैच था शायद पहली स्लिप तक कैरी नहीं होता, इसलिए शेजर ने डाइव की। तो गेंद तकरीबन उनके दोनों ग्लव्स में आ गई थी और गेंद पैदा लगी और अंपायर ने आउट करार दिया। अंपायर शोजेब की उंगली फजा में बुलंद हुई। एक और कामयाबी
बड़ा तबाहकुन स्पेल किया है मीर हमजा ने। इस बार सरमद उनका शिकार हुए। जी हाँ, वही लाइन वही लेंथ, बहुत परसिस्टेंट रहे हैं मीर हमजा अपनी लाइन और लेंथ से। उसी जगह पे बॉल पिच हुआ और जैसे उमर अमीन आउट हुए थे ऑलमोस्ट स्टक हो गए क्रीज में अंदर। और एक आसान से विकेट से अहमद भट्टी 6 रन बनाकर आउट हुए। बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बहुत डिफेंसिव हो गए थे। And Mir Hamza, what a dream start on day one in the first session. That's gone for 4, that's a bad line. It's been struggling a bit, Shahnawaz. You let them off the hook and they will make you pay, because I said these two batsmen got a big hundreds, 121, 127 odd last time around. Upish, but he knows exactly all he has to do is clear that slip cordon and get the boundary. Good ball. Too much width available on that occasion, and bounce also allowed him to play it over. I've got something which I want to share. That's a boundary here. Now boundary's coming in, and this is, you know why this is happening is again because of his shuffling. He moved deep, he dropped it short, he was in a good position. And there's a problem here. It's on the air. This should be taken because the fielder's right under it. Yes! That was a loose shot. He's trying to play that one over the bowler, and the ball gets big on him, gets it high on the bat. And that is a big wicket once again. That's Faizan, the centurion from the last game over here. That's the opportunity we were talking about, because he was not shying away from playing his strokes, Faizan. And once again, trying to play a shot which was not on there at all. And of course, lost his wicket as well. Faizan Riaz goes for 17. Hamad Azam, the most prolific batsman for them this season, walks in. Oh, what a ball. It's just gone over, slips. All three of them are running. Who's going to win this one? Well done. The big man waits for it. Once the boys are done running, throws the ball in. Out of the three, I knew who is not going to win it. And that is exactly what happened. He just stayed behind. He said, okay, two guys are making an effort. Why to spoil that? There was still confusion between the two, Yeah, who eventually got to it. कैचेस छोड़े हैं। असद शफीक ने आज कैच गिराया, सऊद शकील ने भी कैच गिराया था इससे पहले मैच में, और यहाँ असद शफीक ने कैच पकड़ लिया। एक और कामयाबी। हम्माद आजम आउट होकर वापस जाएंगे पवेलियन को, और इसी पवेलियन एंड से ही आज ये गिरने वाली 5वीं विकेट है। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है सेकंड स्लिप पे। वही लाइन वही लेंथ, यही खासियत रही है आज सिंध के बॉलर्स को कि अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार रखा है, और रिजल्ट भी उनकी फेवर में जाते हुए। 5वीं विकेट इन फॉर्म हमाद आजम, जो कि टॉप रन गेटर थे नॉर्दर्न की जानिब से, 1 रन बना के पेविलियन वापस लौटते हुए। कट शॉट खेलने में कामयाब हुए, 4 रन्स। गेंद बड़ी तेज़ी से निकल गई, कोई मौका नहीं था पॉइंट के फील्डर के लिए। पहला चौका लगाया नवाज ने, लेंथ मिली और थोड़ी सी विड्थ भी, जो हाथ खोलने के लिए काफ़ी थी। एक और शॉट गेंद, एक और चौका। इस बार स्लिप्स और गली के दरमियान से गेंद गई, और इस लेंथ और लाइन का बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे मोहम्मद नवाज। करीब था बॉल, जोर से कट मारने गए थे और लकी रहे। हेवी जो स्लिप कॉर्डन है उसके हाथ में बॉल नहीं चला गया। और जोरदार हिट लगाई, इस बार लेंथ तक पहुंचे और बड़ी खूबसूरती से खेल दिया मुबशर ने। उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बाउंड्री। आगे पिच हुआ बॉल था, दलेरी से मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है। बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा मुबशर को इस शॉट से। गेंद निकल गई,
पॉइंट के फील्डर के हाथ से 2 रन का इजाफा। असगर जो मुतबादिल फील्डर हैं वो एक्शन में नजर आए और इस तरह ये पहला सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा जिसमें नॉर्दर्न ने 71 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस उन्होंने जीता था और पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। It's lunch, and what a starlit performance from the bowlers. 3 for Hamza and 2 for Azizullah. And Northern have been under the pump, not been able to get up and get themselves going. First time at the National Stadium in the trophy it has happened that 5 wickets have fallen in the first session. Partnerships, nothing much to say. 21 of 35, the opening partnership. After that, the struggle has been on. And right now, Mubashir and Nawaz trying to just struggle their way out of this 71 for 5 that they're facing. Hamza, 3 for 9 in 7 overs, been immaculate with his length and has been very persistent. Azizullah also equally well, 2 for 27. Shah Nawaz and Abrar just starting off and they're putting in a good hand. So let's see, join session 2 and can Northern form a partnership and get out of trouble? रन्स यहाँ पर आउटफील्ड खासी तेज़ है और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 2 फील्डर्स आए थे गेंद के पीछे, असद शफीक भी साथ साथ उमैर बिन यूसुफ भी, लेकिन रोकना मुमकिन नहीं रहा। डिफेंसिव एज था, इसके बावजूद गेंद बहुत तेज़ी से गई है। That should be a boundary. Cut late, nicely done. So important as a batting unit that any opportunity that comes your way, you got to capitalize, score runs, keep that scoreboard moving, and that's exactly what's done by Nawaz here. Too wide, too easy. There's an appeal. Whoa. He looks excited every time he bowls the Shahnawaz Thani guy. But Shozar was not interested at all. Didn't see much of a reaction from Shahzar, the wicketkeeper. It was more of Shahnawaz's excitement. Look at that, he's not even looking. It's only Shahnawaz who was pushing Shozar Raza with his luck. विकेटों के सामने थे, इसलिए अंपायर ने इत्तेफाक किया। यहाँ पर एहसन रजा ने और पहली विकेट हासिल की अबरार अहमद ने। मुबस्सिर जो फास्ट बॉलर के सामने डट कर खेल रहे थे, सही तरह रीड नहीं कर पा रहे थे वो मिस्ट्री स्पिनर को, स्टंप्स के बिल्कुल सामने करार दिए गए। LBW एक मरतबा फिर आधे दिल के साथ स्ट्रोक को खेलने के लिए गए और बिलाखिर ब्रेक थ्रू हासिल किया। मुबस्सिर की डेब्यू पर 26 रन की पहली इनिंग्स का खात्मा हुआ। 59 रन की पार्टनरशिप टूटी। नॉर्थ अब 110 पे 6। जमाल अनवर एक और तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस सीज़न में उनको ज़्यादा मौके नहीं मिले। अपना दूसरा गेम खेल रहे हैं। और शानदार शॉट, दिलकश टाइमिंग, बहुत बड़ा गैप है स्क्वायर लेग और मिड ऑन के दरमियान, उसी को एक्सप्लॉइट किया नवाज ने। जहां पर एक तरफ रन्स पे जमूद तारी है, वहां पर एक खूबसूरत शॉट देखने में आया है। Drives and drives well, Nawaz. This will go for a boundary, and there it is. More importantly, he gets to his half century. It's been an innings of a lot of class and patience from Nawaz. Provided that half of his side was back in the hut, he had to forge a partnership with youngster Mubassir, and now he's still leading from the front, as I'd use that cliche. 52 now, Nawaz. Cuts away into the gap, and this will run away to the skirting.
Beautiful. That has been the strength of Mohammad Nawaz. You don't bowl him there. He's quick onto his feet, quick off to the back foot. Good set. Plays it well. It's straight down the ground. It will have the legs to get to the boundary. Consecutive fours for Nawaz and Northern. Being at the charge now. 143. This could be the last over before tea. Not defending it or playing for tea here. Off to the back foot again, through covers. This will run away. Yes, it does. 4 runs for Mohammad Nawaz. Well, that's easy to guess that this is the first time in the match so far that we've got 3 boundaries of 3 consecutive deliveries. And that's another one. This will be 16 off the over so far. 150 up as well in the meantime. This is exciting. All eyes on the umpire. What he decides to do. Will he take the bails off? And that's exactly what he's done. So in the end, this session we can now safely say has belonged to Northern. 81 runs, only 1 wicket. So it's tea and not much for Sindh in this session, as just 1 wicket falls and they get themselves the wicket of the debutant. And Jamal Anwar and Mohammad Nawaz going good guns. Now, Mohammad Nawaz has played a key role. I understood the situation very well and making to form bigger partnerships with Mubassir 59, 42 with Jamal Anwar, and it has looked pretty much Northern's way in the session between lunch and tea. The bowlers have worked hard. Mir Hamza once again bowling from a different end and looking equally dangerous, but didn't get wickets in this one. Sindh would hope that they can wrap this up quick in the final session. 152 all on board, looks good. Let's see who wins the final session. फिर वाइड ऑफ क्रीज बॉल की, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ही ये गेंद रह गई. जमाल अनवर को हाथ खोलने का मौका मिला है. दूसरा चौका इन्होंने हासिल किया और इसके साथ ही 50 रन पार्टनरशिप के मुकाबले. शानदार शॉट स्कोर के सामने खेला, देखिए बाउंस बिल्कुल टॉप पे जाकर इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए. आउट, एज निकाला और छुटकारा हासिल कर लिया मोहम्मद नवाज की इस बैटिंग से. खूबसूरत गेंद जो कि पड़ने के बाद एक शार्प अंदाज से अंदर आई, लेकिन इसको वो अपने बैट को दूर रखने में कामयाब ना हो सके. एज निकला और इस मरतबा कोई गलती नहीं की स्टंप्स के पीछे मौजूद शहजर ने. बड़ी कामयाबी सिंध की. जहाँ राउंड द विकेट आ रहे थे और मुसलसल कोशिशों में लगे हुए थे जो रंग लाई, बिल आखिर शाहनवाज धानी उनको खुशी मनाने का मौका मिला. मोहम्मद नवाज मुसलसल दूसरी सेंचुरी नेशनल स्टेडियम पर बनाने से कासिर है. 21 रन के फ़र्क से नौमान अली आए हैं, टीम के कप्तान अभी मैदान में. Well, they all want it, don't they? It was the captain and the wicketkeeper both going for it. Another wicket falls as the captain departs, and finally Shahnawaz Dani gets a wicket. Hard worker with the ball, and he's rewarded with the wicket of the Northern captain. Have a look at this again. The bounce does him, taking his eyes off the ball, getting a bit of glove, and there you go, both of them. And the glove man's job. I think Asad Shafi wanted to grab one after dropping two. Doesn't get an opportunity this time, but it's 8 down. That's good for Sindh. And it's Noman Ali going for no score. Ribbon in the air, but in the gap also. Beautiful batting by Jamal Anwar here. Find the gap with perfection.
This is where Jamal Anwar is so good. Whenever he gets this opportunity to get runs, he's never shy of it. Have a look at this. A bit in the air, but in the gap. No chance for the fielder. Into the gap. We'll have to wait. This might run away. Yes, it does. Third boundary in this over for Jamal Anwar. Beautiful batting. A good partnership building up between these two now. Played it with soft hands. And lucky for him, it went right through the gap of these two fielders. और एक और जोरदार शॉट और इस मर्तबा क्लियर कर गए बाउंड्री को. जोरदार छक्का लगाकर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की जमाल अनवर ने. बहुत ही उम्दा इनिंग्स जमाल अनवर के बल्ले से, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल भी. कैच किया और इस मरतबा बड़ा शानदार कैच. असद शफीक जिन्होंने आज गलतियां की हैं स्लिप में, लेकिन इस बार गेंद को कलेक्ट किया. ये साद खान थे दूसरी स्लिप में और यूं विकेट हासिल हो गई. तीसरी विकेट हासिल की शाहनवाज ने अपनी दाएं तरफ खूबसूरत डाइव लगाई असद शफीक ने, और बड़ा ही क्लीन कैच जिसकी उनसे तवक्को भी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में भी स्पेशलिस्ट स्लिप फील्डर वो कैचिंग करते हैं. इस तरह जमाल अनवर की इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची. 51 रन बनाए उन्होंने, 203 पर 9 खिलाड़ी आउट. आखिरी बैट्समैन आ गए हैं शादाब मजीद. उठाकर खेला, यहां पर मौका है और एक और कैच गिर गया. आज का 7वां. खराब फील्डिंग का मुजाहरा. अबरार अहमद थे डीप पॉइंट पोजीशन पर, खासा वक्त उनको मिल गया था गेंद के नीचे आने का. स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट. एक और उठता हुआ शॉट. इस बार थर्ड मैन पर फील्डर हैं और अच्छा कैच लिया. जो काम मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ी नहीं कर पाए थे, 12वें खिलाड़ी ने कर दिखाया. टॉस हारने के बाद इससे बेहतरीन नतीजा नहीं निकल सकता था असद शफीक के. हाँ, उनकी फील्डिंग एक ऐसा So on the first day of the match, Northern wrapped up in 2.5 sessions. 203 is what they managed, courtesy Nawaz's 79 and a good 51 from Jamal Anwar, and that helped them to cross that 200 mark when they were around 50 odd for 5 down in the first session. These are the partnerships that helped them to do so. 250 partnerships and then a 37 down in the order has worked for them in the 68.2 overs. The bowling has been pretty good from Sindh all round, and their fast bowlers getting wickets, 3 apiece for Azizullah, Hamza and Shahnawaz, and the spinner Abrar also grabbing 1, making sure that they got that initial advantage of 51 for 5 does not slip away. And they wrap up Northern, who won the toss and batted first, by the way, for 203. Let's join Umair bin Yusuf and Sharjeel Khan and Sindh's reply. So far in his spray, Northern will begin with Waqas Ahmed and Sharjeel on strike. 3 sips and a gully. On the hips is going to be runs for Sharjeel all day long. Nice shot on the onside. Bit of wrist work. It's got some timing on it, but the ball is dying. It might just stop on its own. It does. But the good thing is they run 3 more. Shot just screams that through extra cover. That should reach the boundary. He's got it. Enough legs on it. Full flow of the bat. Nicely done. He's a powerful man. Short ball being offered to Umair bin Yusuf. This one is in the air and he's gone. Wicket for Waqas. This was a short ball and he tried to clear that boundary, but a half-hearted shot in the end.
go without any loss, but they have lost the youngster Umair Yusuf. और शानदार पुल शॉट, इस बार लाजवाब टाइमिंग शर्जील खान की। उनका स्कोर 20 के पेटे में पहुंच गया, तीसरा चौका लगाया। बड़ा खूबसूरत शॉट यहाँ पर। आप देखें, टैलेंट में किसी किस्म की कमी नहीं है। ये इतना अच्छा टाइम किया है इन्होंने कि 4 रन हासिल होंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था सिर्फ उन्होंने बल्ला अपना रखा है, थ्रू द शॉट भी नहीं गए थे। बहुत ही खूबसूरत शॉट। यहाँ पर लाइट मीटर लेकर शोजेब रजा, हसन रजा के पास, इन दोनों ने इकट्ठे बहुत ज़्यादा मैचेस ऑफिशिएट किए हैं। मेरे ख्याल से ये जो इशारा किया है इन्होंने कि गेंद मुझे पकड़ा दी जाए, क्योंकि इसके साथ ही एक बहुत ही इवेंटफुल डे आज ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपने अख्ताम को पहुंचा। पहले 203 नॉर्दर्न ने बनाए, एंड रिमेंबर कि वो टॉस जीते थे और बैटिंग करने का फैसला किया था। 5 विकेट्स के लिए पहले सेशन में। दूसरे सेशन में कम बैक किया नॉर्दर्न ने 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर। So round 8 and day 1 comes to an end with 40 for 1 for Sindh, and they will feel that they've got themselves a good start courtesy Sharjil's 32 of 37. He's always having that quick fire score, and he's been the one who gives them that jump start that Sindh requires. They've lost to Umair bin Yusuf, yes, but they still feel they're in the game pretty much. Waqas is the one who got that wicket over Umair bin Yusuf of that bouncer. Already tried 4 bowlers. Norman has this knack of getting in as many options as possible in the last few minutes or half an hour or so of the game. So 40 for 1 at the end of the first day's play. This is what the story is like. 203 Northern all out, courtesy some very good bowling from the bowlers. Azizullah and Hamza getting 3 each. Shahnawaz also coming in with the late 3 wickets, and their spinner getting 1. Nawaz, well, don't forget him. He's got that 79 with all important runs in that 203 that Northern managed after winning the toss and deciding to bat first. So Sindh trail by 163. A lot to play for in this game. Thank you for joining us for the highlights of day 1.